Hey, so let's look at what I mentioned yesterday in my post market. Two plans. One was basically to take shots, short trades after the 10 o'clock event, and one was to take positional options monthly, hero zero puts. First plan, my stop loss got hit. There were no volumes indicating or my system indicating a shot, but I wanted to, you know, see if the risk was only 20 points, so I wanted to take this. Once this was formed, consolidation, close below 10 moving average, stop loss becomes this high, which was 20 points from the entry, which got hit. Second trade which I shared on my social channel was 12:30, below 12:30, sell, stop loss 12:30 high, target day low. That was the only problem. So had taken some hero zero options, 50% booked at good numbers, 50% became zero. So this was the trade. It almost gave you 60 points and the stop loss did not get hit. Yep. And now what will I do on Monday? I already have taken options put, but I've taken it at the lower end, around 17.65, 605 levels in future. So it is in red right now. But yeah, hoping Nifty spot to break 17,400. What I'll do is, last time my 1700 call actually were giving a lot of good profits, but I did not book, and at the end it became zero. So what I'll probably do is I'll probably book some, or I'll book everything and then again take when it comes up. I'm not really sure, but yeah. And if it does not, then it becomes zero. So I'll decide on what to do. So not really looking for a big down move at once. Probably one move comes and then gives you a bounce and then comes back again. I don't know. Let's see. For now, I'm expecting 17,400 to break in spot. Right now, spot is 17,600. So let's see. That is the plan. No plans at open on Monday. I wanted this to break. So let's see what is happening. Was this an expiry play, or are they taking this up? Let's see. थैंक यू. देखते हैं मैंने क्या बोला था कल पोस्ट मार्केट में मैंने बोला था कि 10 o'clock के बाद 10 o'clock इवेंट है, इवेंट के बाद मैं शॉर्ट देखूँगा, पोजिशनली भी और इंट्राडे में भी. तो ये ट्रेड लिया था मैंने, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया. ट्रेड ये था बेसिकली कंसोलिडेशन. ये कैंडल बना, ये तो एक्सपेक्टेड था. कंसोलिडेशन मतलब एक्सपेक्टेड था कि नीचे भी हो सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ आया, इसलिए मैं वेट कर रहा था किस तरफ आएगा. कंसोलिडेशन, 10 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज, स्टॉप लॉस हाई 20 पॉइंट्स, स्टॉप लॉस गॉट हिट. और उसके बाद मैंने अपने चैनल पे एक ट्रेड दिया था 12:30 के नीचे सेल. टारगेट जो था वो नहीं हुआ. टारगेट था बेसिकली डे लो. तो मैंने यहाँ पर 0-0 पुट लिए थे. जैसे ये टूटा, 60 पॉइंट्स दिए इसने फ्यूचर में. पुट्स में मुझे 50% मैंने बुक कर दिया अच्छे नंबर पे, अच्छे. बाकी 50% मैं वेट कर रहा था टारगेट के लिए, इसलिए बुक नहीं किया मैंने. ज़ीरो हो गए. और इसमें क्या कहते हैं, मैंने पोजीशनल पुट भी उठाया, लेकिन वो काफ़ी नीचे उठाया मैंने. और अब मैं कैसे देखूँगा पोजीशनल पुट्स को. पिछली बार जब मैंने 1700 कॉल लिया था, तो मेरे को जब पहली एक अप मूव आई थी, उसमें मुझे अच्छे खासा प्रॉफिट हो रहा था. 300 पॉइंट का मूव था वो, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था मुझे, पर मैंने निकाला नहीं. टारगेट्स के लिए वेट कर रहा था मैं, और वही शायद गलती थी मेरी. मेरे को 50% उस टाइम बुक कर लेना चाहिए था, या पूरा ही बुक कर लेना चाहिए था, फिर बाउंस देख के करना चाहिए था. तो इस बार मैं शायद वो गलती ना करूं, और मैं या फिर पूरा बुक कर दूं या 50% बुक करूं. देखूंगा मैं कैसे मूव्स आ रहे हैं उसके बाद. तो पहला टारगेट मेरा 400 ब्रेक है स्पॉट में. उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा क्या करना है. और मंडे के लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली आज टूटना चाहिए था. अगर ये नहीं टूटा है तो दो ही रीज़न हो सकते हैं. एक्सपायरी प्ले होगा, और या फिर ये लोग नहीं चाहते, ये लोग इसको और ऊपर लेके जाना चाहते हैं. तो मैं ये लोग बोल रहा हूँ स्मार्ट मनी को इंडिकेट कर रहा हूँ. तो देखते हैं क्या होता है मंडे को, ओपन पे क्या होता है, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा. अभी के लिए तो मेरे पास कोई प्लान नहीं है. थैंक यू.